Hello students, hope you all are safe, stay at home. Now we start our next topic of chapter 24, man blood circulatory system. In our previous videos we talk about the blood corpuscles. Blood vessels have three types. Number first is arteries, second is veins and third is capillaries. Yesterday we talked about the difference between arteries and veins. Today we talk about capillaries. Capillaries is the thinnest blood vessels. यानी तीनों blood vessels के अंदर सबसे thinnest blood vessel है capillaries. Its diameter is 4 to 10 micrometer and its length is very small 0.3 millimeter. Capillaries together form a large network. It means capillaries present in our body of a large network in whole our body. Walls are permeable for water and solutes. Its wall are permeable for water and solvents. It means permeable, पारगम्य. इसमें से water और solvents जो होते हैं वो जा सकते हैं. इसकी walls इस तरह की होती है. Its main function is exchange of different substances between blood and blood cells. Exchange of different substances यानी इट मीन्स बहुत सारे सब्सटेंस को ब्लड से लेकर के ब्लड सेल्स तक पहुंचाने का वर्क जो होता है, मेनली ये फंक्शन जो होता है वो कैपिलरीज पर डिपेंड करता है. इट मीन्स मैनी सब्सटेंस एक्सचेंज बिटवीन ब्लड एंड ब्लड सेल्स. नाउ वी टॉक अबाउट द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट. हार्ट स्ट्रक्चर्स is divided in two parts, external or internal. First we talk about the external structure of heart and its main functions, main features are it is a muscular organ. It means the presence of so many muscles in this organ. It is a muscular organ. Size is humans villi. Humans villi it means आपकी जो मुट्ठी है उसको हम विलॉय कहते हैं और इट में ये जो है उस मुट्ठी के आकार का ओनली विलॉय साइज शेप प्रेजेंट इन आवर ए बिग बॉडी. इनमें सोच लो कि आप कितना छोटा आपका हार्ट होता है, केवल एक विलॉय जितना यानी आपकी मुट्ठी के आकार के जितना होता है. इट्स ओरिजिन इज मेसोडर्म. इट्स ओरिजिन एंड वी टॉक अबाउट द previous classes, the whole body is depend of three layers: ectoderm, mesoderm and endoderm. It is present in the mesoderm and it's originated with the mesoderm. यानी इसका जो उत्पत्ति हुई है वो कौन से स्तर से हुई है? mesoderm वाले स्तर से हुई है. Its situation is mediastinal space between both lungs in thoracic cavity. यानी इट जो इसकी स्थिति है, इसकी जो सिचुएशन है वो कहाँ है? thoracic cavity के mediastinal space यानी दोनों लंग्स के बीच में mediastinal space जो प्रेजेंट होता है वहां पर ये सिचुएटेड होती है. Its anterior part is sternum and its posterior part is related with आइसोफेगस यानी अपर वाला भाग स्टर्नम से जुड़ा है और जो पोस्टीरियर पार्ट है वो किससे? आइसोफेगस से जुड़ा है. हार्ट इज सराउंडेड बाय टू लेयर्स दैट वी कॉल द पेरिकार्डियम. हार्ट इज सराउंडेड बाय टू लेयर्स दैट वी कॉल द पेरिकार्डियम. यानी बोल हार्ट जो है, या आप जैसे आप स्ट्रक्चर देख रहे हो हार्ट की, तो हार्ट की जो बोल बॉडी है वो क्या है? इसमें टू लेयर्स की प्रेजेंस है और इसे हम क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम. A fluid in the space, pericardial fluid decrease frictions in between two layers or so many internal parts, and the heart is filled with a fluid and it's a fluid with called as pericardial fluid. The main function of the fluid is it's decrease the frictions when the heartbeat goes down. यानी heartbeat होते समय जो फ्रिक्शंस को, जो घर्षण होता है उसको डिक्रीज करने का काम कौन कर रहा है? जो पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है. नाउ वी टॉक हार्ट वॉल्स हैव थ्री लेयर्स. हार्ट वॉल्स हैव थ्री लेयर्स. इट्स आउटर मोस्ट लेयर यानी जो पूरा हार्ट है इसकी जो वॉल है उसमें तीन लेयर्स प्रेजेंट है इसकी वॉल में. ठीक है, बाहर भित्ती होती है इसकी. आउटर मोस्ट लेयर इट वी कॉल द एपिकार्डियम. Its middle part it we call the myocardium
and third part is called endocardium. And it was divided in three parts: epicardium, outermost, myocardium, middle layer, and endocardium, innermost layer. Heart wall is muscles layer. Heart walls जो है या heart जो है पूरा muscles का बना हुआ है. It's present on the special muscle that we call the cardiac muscles. Cardiac muscles are present in the heart. And so many connective tissues and blood capillaries are also present in the heart. The main muscles is, which muscles is present in the heart? It is important for a short question. Cardiac muscles, and next is connective tissues and blood capillaries. Now we talk about the simple external structure of heart. External structure, as we know very well, our heart, a human heart, is divided in 4 chambers, 2 auricles and 2 ventricles. When we talk about the right auricles, it is called right auricles. Second is left auricles. Third is right ventricle, and fourth is left ventricle. 2 auricles right or left, and 2 ventricles right or left. Its lower part is base part is called apex. Its main arteries present in superior vena cava, and it is present here pericardium invertate. It's the between a chap, जैसे space, that we call the pulmonary arteries. It presents the main veins are present between left auricle and right ventricle, that we call the left coronary veins. It is on the outermost structure of our heart. Thank you. Have a nice day.